Hello everyone, this is Shashank and welcome to Aishagi. So guys, in today's video we are going to talk about the President of India. So guys, if you are learning law, if you are a law student, or if you are preparing for some competitive exam like CLAT, IELTS, etc. So this video is going to be very helpful for you. So and also this video is going to be in Hindi language. And also don't worry if you are English speaking viewer. If you are English viewer, you can turn on the caption from here. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जो बच्चे लॉ के स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा था कि आपको पूरा जो टॉपिक है वो एक तरह से रिकॉल हो जाए या फिर आपसे बहुत कुछ नया सीख सकें। सो पीछे जो आवाज़ आ रही है गाइज, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा एंड आई एम सॉरी फॉर डैट। सो फॉर दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो आर्टिकल है 52 वो डिफाइन करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 में दिया हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल एक और आर्टिकल इसके साथ ही आता है, आर्टिकल 53 क्लॉज 1, जो ये बोलता है जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, ठीक है। और ये भी कहता है जो भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है ना वो सारी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। चाहे तो प्रेसिडेंट उन्हें खुद यूज़ कर सकता है, चाहे अपने किसी सबऑर्डिनेट के थ्रू से यूज़ करवा सकता है। सो जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल, टाइटुलर, अनरियल एंड डी ज्यूर हेड ऑफ स्टेट होता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक तरह से बस एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इट मीन्स लाइक जो रियल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो मतलब ये जो रियल पावर्स होती हैं वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का वो कहा जाता है प्रेसिडेंट को, इसलिए इनको नॉमिनल, टाइटुलर, अनरियल, डी ज्यूर हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया and second he must have completed the age of 35 years. Very easy. Now the third point, he must be qualified for elections as a member of House of the People. Now pay attention here. यहाँ पर लिखा गया he must qualified, okay? यहाँ पे नहीं लिखा कि he must be a member of the House of the People. यहाँ पे लिखा he must qualified for election as a member of House of People. Now इसी में second point है he must be registered as a voter in any parliamentary कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। सो हियर द लास्ट पॉइंट सेज ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, अदर और लोकल अथॉरिटी सब्जेक्ट टू बी कंट्रोल्ड और एडमिनिस्टर्ड बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे कहना चाहता है कि वो कोई भी ऐसा प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड ना करे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर हो, कोई भी अदर और लोकल अथॉरिटी जो कि कोई भी गवर्नमेंट उसे कंट्रोल या उसको एडमिनिस्टर कर रही हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते कैसे हैं। तो इनमें पार्ट कौन लेता है और इसमें वोट डालता कौन है। इसमें पार्ट एंड वोट करते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ लिखा है द इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट द टोटल और द नॉमिनेटेड मेंबर्स, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एंड हियर आवर सेकंड पॉइंट, the elected members, here again the elected members, okay, remember this term, elected members of the legislative assemblies of the states। और हाँ एक चीज़ और, जो इलेक्शंस के प्रोसीजर है वो दिया गया है इस आर्टिकल 54 के अंदर। अभी हमने बात करी इलेक्शंस के बारे में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इलेक्शंस में प्रेसिडेंट का या किसी और में कभी कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो इलेक्शन हुए वो फेयर नहीं हुए हैं। तो इस केस में हम जानेंगे क्या होगा अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डाउट आता है या डिस्प्यूट होता है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पे आर्टिकल 71 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे कोई भी डाउट होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो इसकी इंक्वायरी या फिर कोई भी जो डिसीजन होता है वो लेता है सुप्रीम कोर्ट, और इसका जो डिसीजन होता है वो होता है फाइनल। सो अब बात करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस को वॉइड ठहराता है तो क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम बनाया है बहुत ही सुंदर सा। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड करार देता है तो ऐसे में यहाँ जो आर्टिकल 71 क्लॉज 2 है वो डिक्लेयर करता है जो भी एक्ट किए गए होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो उनकी पावर्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस एज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो इनके एक्ट होते हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे इन द रीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज दे डिक्लेयर द इलेक्शन एज वॉइड। अगर उन्होंने इस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर भी दिया हो तो इस टाइम पीरियड में जो भी एक्ट किए गए होंगे ना उस प्रेसिडेंट के द्वारा वो इनवैलिड नहीं होंगे। इम्पीचमेंट के बारे में बात करने से पहले इन दोनों आर्टिकल्स को एक बार देख लेते हैं। सो आर्टिकल 56 का कहता है अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है तो उन्हें उनकी सीट से हटाया जा सकता है,
ठीक है, और उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। और उसका जो मैनर है हटाने का, द मैनर टू रिमूव द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो दिया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि हाँ हमने हटा सकते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं तो उन्हें हटाया सकता है। सो किस मैनर में हटा सकते हैं, सो ये है रिटर्न है इन आर्टिकल 61। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, जो प्रेसिडेंट के रिमूवल का चार्ज है वो कौन से हाउस में इनिशिएट करा जाता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो उसका आंसर है किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के हाउस में इसको इनिशिएट करा जा सकता है। और यहाँ पे ये जो चार्ज होता है, जो जिस भी हाउस में इसको इनिशिएट करा जा रहा है, वो एक रेजोल्यूशन की फॉर्म में यहाँ पर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है। सो यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है, जो रेजोल्यूशन है वो किसी भी हाउस में लाने से पहले उसके 14 दिन पहले एक नोटिस जारी करना पड़ता है, और उस नोटिस की एक्सपायरी होने के बाद ही जो रेजोल्यूशन है वो किसी भी हाउस में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट करने की बात यह है कि जो रेजोल्यूशन है वो रिटर्न होना चाहिए और ड्यूली साइन होना चाहिए बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। सो चौथा पॉइंट ये है कि जिस भी हाउस में उसे इनिशिएट करा गया था, अब उस हाउस को उसे पास करना पड़ता है बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सो अब पांचवा पॉइंट ये रहा, अब जिस भी हाउस में उस चार्ज को इनिशिएट करा गया होता है और उस हाउस से उस रेजोल्यूशन को पास किया गया होता है, ठीक है, तो उसके बाद दूसरे हाउस का जो काम ये होता है उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करना। सो बात करते हैं छठे पॉइंट की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कहा जाता है कि जो भी हाउस उस रेजोल्यूशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, प्रेसिडेंट के खिलाफ लगे चार्ज को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, अगर वो उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और फिर देन इस जो रेजोल्यूशन को इफेक्ट में लाया जाता है और प्रेसिडेंट को अपना जो ऑफिस है वो खाली करना पड़ता है। हाय गाइस, आई एम शशांक एंड यू वाचिंग द आयशा की। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में मैंने बात करी प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन एंड डिस्प्यूट्स ऑफ इलेक्शन and the impeachment of president. So guys, this is the first part of the video, and I will try to cover up the whole part of the president in the upcoming part 2 of this video. If you like this video, please make sure to subscribe the channel and make sure to press the bell icon too, and make sure to share this video and like this video too. Goodbye and stay healthy. Hello everyone, this is Shashank, and in today's topic we are going to talk about the powers of president. And as you remember, in the previous video of the president, we have talked about how the president is elected, what are the qualifications to become the president, and the manner of election, and also if there is any dispute or any doubt in respect of the election of the president, then how it is resolved. And in the last we talked about the impeachment of president. The today's topic is the powers of presidents. So let's start with the privileges of the president, which is under the article 361. The president is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. However, the conduct of president may be brought under review by any court or any tribunal body which may be appointed or designated by the House of Parliament for investigation of charge against president. And the second point, no criminal proceedings can be whatsoever shall be instituted or continued against the president in any court during his term of office. And the third point, no process for the arrest or imprisonment of the president shall be issued from any court during the term of his office. Now the fourth and the last point, no civil proceedings in which the relief is claimed against the president shall be instituted during the term of his office in any court in respect of any act done or purported to be done by him in his personal capacity. Now guys, let's talk about the powers of president. So let's start with the legislative powers. First point is the president is an integral part of Parliament of India. And the second point, he can summon or prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. He can also summon a joint sitting of both the houses of parliament, which is presided over the speaker of Lok Sabha. The third point,
He can address the parliament at the commencement of first session after each general election and the first session of each year. He can send messages to the House of Parliament, whether with respect to a bill pending Parliament or otherwise. Now, the fourth point, he can appoint any member of the Lok Sabha to preside over his proceedings when the offices of both the Speaker and the Deputy Speaker fall vacant. Fifth point, he nominates 12 members of Rajya Sabha from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, and social service. Number 6. He decides on questions as to disqualifications of members of parliament in consultation with the Election Commission. Number 7. His prior recommendation or permission is needed to introduce certain types of bills in the parliament. For example, a bill involving expenditure from the Consolidated Fund of India or a bill from the alteration of boundaries of states. Number 8. When a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament. So, what can he do here is either he can give his assent to the bill or withhold his assent to the bill or return the bill in case it's not a money bill for reconsideration of the parliament. Number 9. When a bill is passed by a state legislature is reserved by the governor for consideration of the president. The president can give his assent to the bill or withhold his assent to the bill or direct the governor to return the bill if it is not a money bill. So the legislative part is over. Now coming up to the veto power of the president. A bill passed by the parliament can become an act only if it receives the assent of the president. When such a bill is presented to the president for his assent, he has three options. The first option, he may give his assent to the bill. The second option, he may withhold his assent to the bill. And the third option, he may return the bill in case it is not a money bill for reconsideration of the parliament. Thus, the president has veto powers over the bills passed by the parliament. So the first point here is to prevent hasty and ill-considered legislation by the parliament. And the second point, to prevent a legislation which may be constitutional. So coming up to the executive powers. So guys, I would like to let you know that all the executive actions of the government of India are formally taken in his name. Second point, he appoints Prime Minister and other ministers also. Point 3, he appoints Attorney General of India. Number 4, he appoints the Comptroller and Auditor General of India. He also appoints the Chief Election Commissioner and other election commissioners. And he also appoints the chairman and members of UPSC and the governors of states and the chairman and members of Finance Commission. Number 5, he can appoint a commission to investigate into the conditions of SCs and STs and other backward classes. Number 6, he can appoint an interstate council to promote center-state and interstate cooperation. So the next point, he directly administers the duties through the administrators appointed by him. And the last, he can make regulations for the peace, progress and good government of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu. In case of Pondicherry also, the president can legislate by making regulations, but only when the assembly is suspended or dissolved. Now let's talk about some most important powers of the president, like the financial powers. First point, money bills can be introduced in the parliament only with his prior recommendation. Number 2, he causes to be laid before parliament the annual financial statement, that is the union budget. Number 3, no demand for a grant can be made except on his recommendation. Number 4, he can make advances out of Contingency Fund of India to meet any unforeseen expenditures. Number 5, and this is also a very important point, you must remember it. He constitutes a finance commission after every 5 years to recommend the distribution of revenues between center and states. Now let's talk about the judicial powers. He appoints Chief Justice of India and judges of the Supreme Court and High Courts. Second point, he can seek advice from Supreme Court on any question of law or fact. However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President. So this is also some kind of important point you must remember. Number 3, this is also kind of important one, please remember it. He can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment, or suspend or remit or commute the sentence of any person convicted to any offence.
Now let's talk about the diplomatic and military powers. The international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of President. However, they are subject to the approval of the Parliament. He represents India in international forums and affairs and sends and receives diplomats like ambassadors, high commissioner and so on. So second point here, he is the supreme commander of defense forces of India like army, the navy and the air force. Now let's talk about the last and one of the important powers of president, which is the ordinance making power described under article 123. So the article 123 clause 1 describes if at any time except when both houses of parliament are in session, the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require. So, an ordinance promulgated by president has same force and effect as an act of parliament. Now, the president may promulgate ordinances under Article 123 Clause 1 with respect to all those matters with respect to which parliament is competent to make laws. So guys, I would like to mention these 2 points again, that under which circumstances the presidents can promulgate the ordinance. First point, when both houses of parliament are not in session, and second, when circumstances exist which render it necessary for the president to take immediate action. So guys, the topic powers of president is completed. I hope you enjoyed the video. If you have any doubt or query, please let me know in the comment section. Please make sure you like this video and share this video also. For more interesting videos like this, please make sure to subscribe and press the bell icon. So till then, be happy, be healthy and be focused.